dilution on lambda m of weak electrolyte and strong electrolyte. Number one, what happens if I dilute? What happens with lambda m when I dilute a strong electrolyte? So please write this with me. We will call a strong electrolyte as Se whenever needed. Okay. Please write this with me. And once I write this down, then I will explain it. Please write when solution of even solution is diluted, lambda m of strong electrolyte increases slowly because strong electrolyte is almost completely dissociated. Almost completely dissociated, due to which graph of lambda m versus root c is linear for strong electrolyte. Yeah, sorry. So what is it saying? It is saying that the strong electrolyte by definition is something which is almost dissociated. Almost 100% dissociation happens in strong electrolyte. Now, what happens when you dilute something? When you dilute something, more dissociation happens. If something is already completely dissociated, much more you can dissociate it furthermore. Okay? So that is why what happens if you dilute it, the lambda m is going to increase very slowly. Like after a lot of dilution, there will be a slight increase in the lambda m. Does it make sense? Yes or no, Rishita and Harsha? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलें? Yes, sir. पक्का? हाँ ऋषिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक. So when we make a graph, then this graph is between lambda m, the molar conductivity, and root c. Root c is concentration here. Okay. So when you are going to dilute something, what will happen to concentration? It will increase or decrease. What happens to concentration when you dilute a solution? It will increase or decrease. Rishita, will the concentration increase or decrease? It'll decrease. Decrease, right? Yeah, that is why I will start on the right side of the graph and I will slowly go up, because as I am diluting, see, this is my concentration right now. As I am diluting it, the lambda m is increasing. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Okay. It will increase. After that, there will be very minimum increase. Okay. So that is why we cannot like do so much dilution and it keeps on increasing. So it will reach a value. After that, we cannot measure the change. So, but what we can do, we can rather, let's suppose यहाँ तक आपका you got the data till here, fine. Now, after that, we can do somewhat. We can do some extrapolation. We can do some extrapolation like this. Okay. Now, why do we do extrapolation? So that we can get this value. What is this value? This is the maximum lambda molar conductivity.
Maximum molar conductivity when the concentration is zero. It is lambda m naught. That is the limiting molar conductance. If you remember from the last class, yes or no? Makes sense, Rishita? Yes, sir. Okay, please write this with me. Lambda naught m of strong electrolyte can be determined using this plot. Right, this plot follows Debye Huckel equation. This is the Debye Huckel equation. Lambda m at a particular concentration is equal to lambda naught m minus b into root c. ठीक है? So you can see that this is the y lambda m. Now this is the x. So whatever is with x is m, and this is c, that is lambda naught. Huh? So you can see the slope is what? Slope is negative. That is why we are having a negative slope, a downward slope like this. So this b depends on charge on ion. आयन के ऊपर जो चार्ज होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करता है. After this, write weak electrolyte. Second, raise your hand once you're done, Rishita. After this, we'll write for weak electrolyte also. उसके बाद फिर हम समझाते हैं, ठीक है? You will understand on your own, by the way, for weak electrolyte. Please write this with me. When solution containing weak electrolyte is diluted, then lambda m increases very sharply because weak electrolyte is only partially dissociated and as the dilution increases, the dissociation of electrolyte also increases. Therefore, the graph of lambda m versus root c is not linear for weak electrolyte.
You understood, Rishita? क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट? Did you understand? Yes, sir. है ना, उसमें क्या हो रहा है, like weak electrolyte is not dissociated, so if you are going to dilute it, then what's going to happen? The dissociation will increase very sharply, and when it increases very sharply, did you write this down, Rishita? Yes, sir. So when it is increasing very sharply, then the graph will be something like this. Just have some patience, okay? I'm making the graph. कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा, ठीक है? So you can see that here we are having lambda m and here we are having root c. So you can see that when the root concentration is less, नहीं, when the concentration is high, यहाँ पे right side में ना concentration is high and we are slowing going towards zero for concentration, है ना? That means we are diluting it. So as we are diluting, the lambda m is increasing very sharply, and we can see that this particular plot, it is going to meet the y-axis at infinity. So we cannot measure the lambda naught m for weak electrolyte because of from this particular graph, है ना? So we use something else and उसी के बारे में ज़्यादा detail, that is called Rolle's law. It is evident, you can write this down. It is evident that lambda naught m of weak electrolyte cannot be determined from this plot. आपकी छुट्टियां खत्म हो गई ऋषिता? Yes, sir. Last week. मंडे से क्लास है या सैटरडे से? नहीं, सैटरडे तो आज ही है। Mondays. अच्छा, मंडे से। अच्छा, आपका सैटरडे संडे ना शायद? Yes, I changed like last year, I think. You changed last year? No, I mean the rule from The rule Friday to changed. Saturday. Yeah. The rule of Friday को कह रहे थे आप? Friday to? The rule of the weekend being Friday and Saturday, it changed from Saturday and Sunday. It changed to Saturday and Sunday. अच्छा. So now like Friday is half day or something? Yeah, it school ends at 12, but grade 10 and 12 have extra classes on Saturday. Grade 10 12 has extra classes on Saturday or Friday? It's Saturday. Saturday also. So they can call you for extra classes. उसका कुछ rule regulation कुछ नहीं है? पता नहीं sir. I don't think there is one. Okay. Let me know if you're done. Done, sir. Right. Now, in order to determine the lambda naught of a weak electrolyte, we use Colroyd's law, है ना? कॉलेज ने काफी काम किया इसके ऊपर. Please write Colroyd's law of independent migration. The law is very simple. Please write this with me. It says that the lambda naught m of an electron is equal to the sum of
molar conductance of its contributing ions at infinite dilution. बेसिकली क्या मतलब है, lambda naught m of an electrolyte will be equal to the lambda naught of the cation plus lambda naught of anion. For example, if I have lambda naught, if I want to determine the lambda naught of NaCl, then what I will have to do, if I know the lambda naught of Na positive and I know the lambda naught of Cl negative, and I just add them, I will get the lambda naught of NaCl. Or similarly, if I have, for example, lambda naught, if I want to determine the lambda naught of MgCl2, I can, if I have the lambda naught of Mg2 positive and I have the lambda naught of Cl negative, I will add these two, but also I have to add multiply 2 because MgCl2 के लिए we have two chloride ions ना, so that I have to multiply 2 here. Does it make sense? Yes or no? Please tell me, Rishita. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ऊपर तक लिख लिया आपने? हाँ, sir. ठीक है, चलिए कुछ और लिख लीजिए. For example, if you have lambda naught, you will write this on your own, okay? Cl3 is equal to what? Lambda naught of KCl will be equal to what? Lambda naught of AgCl will be equal to what? ठीक है, इतना करिए. Sir, should I send it in WhatsApp or should I just say it out Just loud? say it, just say it, just say it. So, lambda naught Al plus Al3 plus 3 lambda naught Cl minus. Hmm. You can say Cl minus Al plus चलेगा उतना, बताइए हम हिसाब से. Okay. Yes, sir. Lambda K plus हाँ. lambda 0 K Cl minus. हम्म. ADCl. Lambda 0 Ag plus lambda 0 Cl minus. तो लैम्डा नॉट बोलते हैं बाय द वे, है ना? Lambda naught. Yes, sir. नो, देयर आर फ्यू मोर, इसको हम लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH, lambda naught of NH4 positive plus lambda naught of OH negative, lambda naught of CH3 COOH, lambda naught of CH3 COO negative plus lambda naught positive. Now, in general, I can say number of cations multiplied by the lambda naught of each cation plus number of ion into the lambda naught of each anion, है ना? यहाँ पे N positive tells you number of cation after dissociation. N negative tells you about number of anion after dissociation.
बड़े आगे। यस सर। चलिए, ये तो बिल्कुल आपको मतलब ये तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, आपके दिमाग में अब तो चिपक गया होगा, बहुत आसान चीज है ना। यस। चलिए, एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज राइट एप्लीकेशन ऑफ कॉल रोस्टर, या बस एप्लीकेशन लिख दीजिए। जब भी आप आ जाए ना तो आप लोग कान खड़े कर लीजिए, यानी यहीं से सवाल आते हैं फिर, ठीक है। नंबर वन, टू डिटरमाइन लैम्डा नॉट एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए कॉलर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ वी डिटरमाइन और नॉट एम यूजिंग द कॉलर स्टॉक यूजिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देखिए, तो सवाल कह रहा है कि द लैम्डा नॉट ऑफ देयर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन CH3 COONA is equal to some x सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इधर से लैम्डा ऑफ NaCl is equal to y सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इधर से लैम्डा ऑफ HCl is equal to z सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इंस्टेड ऑफ x y एंड z ना, आपको तो नंबर दिया रहेगा, बट आई एम नॉट राइटिंग एनी नंबर्स बिकॉज़ द minute and minor very simple calculation are involved here, है ना। they are asking find lambda naught m of CH3 COOH, ठीक है। तो इफ यू आर राइटिंग प्लीज राइट दिस डाउन क्विकली एंड टेल मी वंस यू आर डन। आफ्टर दैट पेन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप पूछते जाएंगे सवाल, आप बताते जाइएगा, ठीक है। यस सर। जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन। लिख लिया सवाल, नहीं लिखा सवाल? हाँ सर, डन। है ना? ठीक ठीक। तो सबसे पहले ना देखिए, यू हैव टू फाइंड द लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH, तो उसको तभी भूल जाइए। दिमाग पहले आई एम फिनिश एवरीथिंग, देन आई विल टेल यू दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर माइंड, और फिर जल्दी कैसे करना है, ठीक है। अभी हम सारे आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर दी फर्स्ट वन, you dissociated CH3COONA will be dissociated into Na positive plus CH3CO negative, and इसके लिए जो lambda है, that is lambda naught for this is what? X. Does it make sense? If I add both of these, I will get equal to X. Make sense? Yes or no? यस सर। Now, for the second one, it is was NaCl is going to get dissociated into Na positive plus Cl negative, and this will correspond to, correct है? यस सर। थर्ड है आपके पास HCl, H positive Cl negative, ये आपके पास Z, सही है, हाँ है ना? ठीक है। हाँ। आफ्टर द डिसोसिएट द टारगेट, थोड़ा आपको थर्मोडायनेमिक जैसा फील आ रहा होगा, थर्मोडायनेमिक टारगेट टारगेट था, है ना। तो CH3COOH को क्या कीजिए, CH3COOH कीजिए, विल गेट CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। डज इट मेक सेंस? जैसे नोटिस में, यस सर। ठीक है। तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH पॉजिटिव, CH3COH विल बी इक्वल टू, आई वांट CH3CO negative. Do you CH3CO negative in 1 to 3 anywhere? यस कहीं सर, पे भी आपको, वन। कहाँ पे? 1 में। तो 1 पे क्या है? X है, तो X को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। अच्छा, माइनस यहाँ से you will have CH3CO negative as well as Na positive, so I will have to minus the lambda naught of Na positive। क्या ख्याल है?
मेक सेंस? So can you repeat करेक्ट है? that? देखिए, इन द एक्स आई विल गेट द लैम्डा नॉट ऑफ CSC CO नेगेटिव एज वेल एज Na पॉजिटिव ना, Yeah, yes, sir. है ना? So I know CSC CO negative, so I'm subtracting Na positive. Make sense? Yes or no? Yes, sir. सही है। अच्छा, उसके बाद H प्लस कहाँ मिलेगा? 3. 3 तो राइट, प्लस Uh, Z minus Z माइनस, lambda not CL हाँ, minus. CL minus, because lambda not CL minus is not required. So I will have X plus Z minus, in bracket I can write lambda not Na positive plus lambda not CL negative. Does it make sense? Yes, sir. That will give Now I can, NaCl. that will be minus, Lambda not NaCl. and which is equal to Uh, and Y. y, very good. Make sense now? कैसे करना है? हाँ सर. माइंड में आपको मतलब सीधा आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं? नहीं सर. सीधा यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। Oh, हाँ, yeah, we can do it यू directly. कैन थिंक ना दैट अच्छे डिसोसिएट होगा, इससे डिसोसिएट होगा, मतलब एक्चुअली जस्ट नीड टू डू, थोड़ा रफ रफ वर्क करना पड़ेगा, हल्का सा, बहुत 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 हल्का सा, है ना? फिर तुरंत होने लगेगा। Yes. ठीक है, राइट दिस डाउन। तो अगला ऐड करेंगे फिर हम लोग, है ना? हम लोग करेंगे। चलिए कीजिए, इसको Yes. कॉपी कीजिए। हो गया तो बताइएगा ना रिशिता। Yes, sir. I'm done, sir. डन। चलिए, अगला सवाल। लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू एक्स वाई सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन सेंटीमीटर पर मोल। लैम्डा नॉट ऑफ NaOH इक्वल टू वाई सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके बाद है लैम्डा नॉट ऑफ Cl इज इक्वल टू Z सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, डिटरमाइन लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH। तो टारगेट कम से कम बताइए आप, है ना? यू कैन टेल द टारगेट। हम्म, बताइए। Uh, C. Sorry, NH4OH, NH lambda not. अरे Okay, अरे अरे, minus. इसको टारगेट को डिसोसिएट तो करो। Okay, NH4 plus OH minus. माइनस, अच्छा, lambda naught of NH4OH will be equal to, where will you get NH4 positive from? X. X, है ना? याद रखिए क्या हटाना है वहां से, है ना? X से क्या हाँ हटाना है, याद सर. रखिए।
अच्छा, ओ एच X नेगेटिव कहाँ? हाँ, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए भैया। ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव आपको NaOH Y वाई, तो प्लस वाई, फिर माइनस जेड कर दे पूरा। minus Z. ठीक है, चलिए आ गया ना सीधा। Yes, sir. So questions would be asked like these because in my class they don't give X, Y, Z. They just tell to ask. They just ask lambda not NH4OH. नहीं, नंबर देंगे ना फिर, लैम्डा नॉट एक्स की जगह कोई नंबर होगा। अगर कोई सवाल आपको दिख रहा था, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, कुछ इस तरह का हमको सवाल भेजिए जरा, Okay, sir. इंडियन One व्हाट्सएप। second. हाँ, भेजिए भेजिए। So that will be a different type of question. क्या सर? वो फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब इस टाइप का सवाल नहीं होगा फिर वो, तो कुछ और दिया होगा, सीधा नहीं बोल देंगे डिटरमाइन अप्रोच, ठीक है, कुछ तो दिया होगा। इफ नॉट दिस देन समथिंग एल्स फॉर श्योर। ठीक है, आप No, निकालिए they ना। give. No, sir. I left. My inorganic notebook is in school. स्कूल में ही क्यों छोड़ दिया आप? हाँ sir. But they gave everything, but they just didn't give X, Y, Z. दे गिव यू नंबर ना इंस्टेड ऑफ एक्स वाई एंड जेड। I think so. Yes, sir. है ना? है, Yes, sir. ठीक है, एनसीईआरटी का एक सवाल है, वो हम आपको दिखाते हैं, इसी तरह का सवाल होगा मोस्ट प्रोबेबली जो फील्ड में। असल में हम नंबर नहीं ले रहे ना, बिकॉज वो फिर अभी तो फंडा सीखना है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आ ही जाएगा आपको, या कराना पड़ेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन? हम्म, Yes, sir. आ जाएगा या कराना पड़ेगा? नहीं आ जाएगा सर. आ जाएगा ना। फिर एक सवाल ये कर लीजिए, ऐसे रहता सवाल, देखिए जरा। हाँ रिश्ता, हाँ सर. तो इसमें देखिए बस एक चीज आपको जो अलग सी लग रही है ना, दैट इज एसी। एन ए ए सी क्या है? तो आपको कुछ नहीं पता, छोड़ दो, एन ए होगा। एन ए तो जब डिसोसिएट होगा, लाइक एन ए इट इज अटैच विद एनीथिंग एल्स, इट विल बी अटैच, लाइक एन ए प्लस और ए सी नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ सर. अच्छा, बाय द वे टेक दिस एज एक्स वाई एंड जेड यार, इसको मतलब सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। एक्स ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, हमको एक्स वाई जेड के टर्म्स में यहाँ से बता दो। यस सर. रिश्ता, थिंक लाइक दिस, एच कहाँ से मिलेगा, एसी कहाँ से मिलेगा, क्या बचा और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थिंक लाइक दैट, है ना? तुरंत आंसर आ हाँ जाएगा। सर. It will be Y plus Z minus X. वाई मिलेगा आपको, हाँ ठीक है, वाई प्लस जेड माइनस Z एक्स, है ना? minus X. Yes हाँ, sir. तो अब देखिए वाई की वैल्यू कितनी है, 425, प्लस जेड की 14.9. वैल्यू 91 माइनस 126.4। ऐसे कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सीधा। गॉट इट? Yes sir. प्लस 91 माइनस 126.4, हाँ बस सही आंसर, 90.5 आएगा, ठीक है। अब यह बात बता देते हम आपको, एसी है क्या? एसी इज शॉर्ट फॉर एसीटेट। एसीटेट आपको पता होना चाहिए, सी एच थ्री
CO negative है ना, so and it is having HAC, that means it is acetic acid, and this one is sodium acetate. Got it? Yes, sir. ये तो सारे आसान है, थोड़ा सा टेक्निकली मतलब थोड़ा टफ जो है वो ये सब देख- आपको दिया उसी तरह से NH4 lambda naught of NH4Cl as X, lambda naught of BaOH whole twice as Y, lambda naught of BaCl2 as Z. ठीक है, and they're asking lambda naught of NH4OH. तो ध्यान से देखिएगा जरा, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है दिशिता, सुनिए. So I can say that lambda naught of NH4OH will be equal to, ध्यान से देख रहे हैं, आर यू लिसनिंग टू मी ऋषिता, ये सुनो. Yes, sir. NH4 कहाँ से मिलेगा? X. X से मिलेगा. और OH कहाँ से मिलेगा? आई हैव टू कैलकुलेट दिस वन ना, ये कैलकुलेट करना है. OH मिलेगा Y A YA Y Y Y. So but how much OH I need to, 1 या 2, कितना OH चाहिए हमको? 1. So will 1. it And be how Y many? by 2? यस, वेरी गुड. ठीक है, अब Yes, जब sir. माइनस करने की बात आएगी ना, नेगेटिव माइनस करने की बात आएगी ना, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव एडेड. तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस Cl नेगेटिव, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मेक सेंस? ये सुनो, Yes, sir. है ना. प्लस आई नीड टू सब्ट्रैक्ट लैम्डा नॉट ऑफ Ba डिवाइड बाय, बिकॉज We समझ में आ divided रही the है? whole. Yes, हाँ, sir. वी डिवाइड बाय होल वाई ना. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इट विल बी x plus y by 2 minus, I will, if I take the LCM and do things like this, I will get lambda naught of Cl negative plus lambda naught of Ba 2 4, इस तरह से मिल जाएगा, डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2. डज इट मेक सेंस? जैसा Yes, sir. अब एक Ba 2 Cl, Z आ गया. Yes, sir. So Z by 2. ना ये बहुत ही रेयर चांस में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी में भी नहीं है फिर, मतलब बाई 2 वाला ना ही बोर्ड्स ने आज तक कभी पूछा है. Oh, okay, sir. So if they do ask a question like this, I can just first substitute the numbers for X, Y, Z and then add the actual numbers at the end, right? हमेशा XYZ कर लीजिएगा पहले, क्योंकि आसान है ना XYZ करना, Yes, sir. है ना. XYZ हमेशा कर लीजिएगा और उसके बाद नंबर सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, ठीक है. Yes, sir. नंबर्स को असाइन कर दीजिएगा, ये एक्स है वाई है, मतलब बोर्ड से आपको पूरा उस फाइनल आंसर चाहिए. एक मार्क्स का सवाल आता है, ये पता है आपको? If they are going to ask this will be asked only for 1 mark. Oh, okay. Yep, that is, इसीलिए तो हम बोल रहे थे ना कि डायरेक्ट निकालना सीखिए, क्योंकि इतना हाँ, लंबा अगर आदमी करेगा तो ये तो लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि 3 मार्क्स का सवाल है यहाँ से लेके यहाँ तक. बट yes, ऑल ऑफ दीज yes, आर बेबी स्टेप्स, ऑल ऑफ दीज आर बेबी स्टेप्स, है ना. तो इस वजह से ये अगर आप बस इतना लिख दीजिएगा ना, इन द सेंस विद द नंबर्स एंड देन, तो फुल 1 मार्क्स तो उसमें क्या फुल हो रहा हो. ठीक है, yes, sir. चलिए. अगला जो दो एप्लीकेशन है छोटा छोटा, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 मार्क्स का सवाल आ जाते हैं. टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट. बहुत आसान है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज शोन बाय अल्फा, शोन बाय अल्फा इक्वल टू, देखिए अगर पूरा डिसोसिएट हो जाता तो हम लोग को इनफाइनाइट जाता, उससे आगे डायरेक्शन होता, मतलब उससे आगे डिसोसिएशन होता नहीं है. तो दिस लैम्डा नॉट दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इट डिनोट्स इनफाइनाइट, कंप्लीट डिसोसिएशन.
और जितना हुआ है वो आपके पास लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जो भी आपके पास लैम्डा आ रहा है, दैट विल बी द डिसोसिएशन दैट इज अकरिंग। तो देखिए जनरली क्या होगा ना, दिस वैल्यू विल नॉट बी गिवन, you have to calculate this value from this formula lambda m c, it is equal to activity multiplied by 1000 divided by the molarity। यहां से आपको निकालना पड़ेगा lambda m c, the lambda not m will be given, अगर बहुत हो गया ना तो lambda not m ना देके क्या करेगा, they will give you, they are going to give you lambda not of cation and lambda not of anion, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, you will get the lambda not m, once you divide both of these things you will get the alpha। ठीक है, now because here there are दो तीन फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो इस 3 मार्क्स का सवाल आ जाता है, इवन दो ऑल दी कैलकुलेशंस विल बी सुपर इजी, अभी हम कराएंगे, ठीक है, डोंट वरी। उसी तरह से तीसरा है टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन कांस्टेंट इट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ अल्फा आपको पता है इट इज इक्वल टू व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या इस्तेमाल हो रहा है, लैम्डा एम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम। So from here I can say that what we have written the previous case, that the dissociation will be equal to C into lambda m c divided by lambda naught m whole square, this whole thing divided by 1 minus lambda m c divided by lambda m। ठीक है, although you don't need to remember the last form, I mean you need to, you should be able to identify the formula, that's it। ऐसे फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं, लेकिन एमसीक्यूज में फॉर्मूला आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड द मोलर कंडक्टेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, इस तरह का सवाल बन सकता है। डन से। डन, चलिए अब करते हैं थोड़े सवाल इसके। सवाल में आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना, ऐसे बड़ी बहुत आपको लग रहा होगा बट ओ माय गॉड क्या ही फॉर्मूला है, बट डोंट वरी टू मच। देखिए कितना आसान है, प्लीज हर्षिता मार्क कर लीजिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आते हैं, भले ही इट इज सो शॉर्ट टॉपिक ना, तुरंत खत्म हो गया, हाँ या ना हर्षिता, हाँ सर। लेकिन ध्यान मार्क्स से सवाल आ जाते हैं। देखिए कितना सा सवाल है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH इफ लैम्डा m दिया हुआ है, लैम्डा नॉट m भी दिया हुआ है, अल्फा इट इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, लैम्डा यस सर। m इज गिवन एज 48, लैम्डा नॉट m एज 400, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 मार्क्स, ओ माय गॉड। This comes for 2 marks, sir? यस, Oh, wow. And the previous question come for 1 mark. That's weird. 1 मार्क्स। हाँ बिकॉज सी द थिंग इज इफ यू अंडरस्टैंड दैट इज, वो लॉजिक है लेकिन उस लॉजिक में कुछ खास नहीं है, बट ये जो है ना, दिस एप्लीकेशन, अब सोचो इस बात को थोड़ा, if you मतलब if you have lambda m and lambda not m, you can calculate the degree of dissociation, it is such a one thing, if you are, क्या हम अगर नमक डालेंगे या फिर if I am adding any weak electrolyte तो ये कितना परसेंटेज डिसोसिएट करेगा, you can have that data।
ठीक है, तो उस हिसाब से इट इज वेरी, मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। ओके, सो दैट इज वाई इट इज आज वही छोटा सा फॉर्म, एप्लीकेशन काफी है इसका। आपको अगर याद हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में इतने सारे अल्फा के वैल्यूज दिए हुए थे ना, हाँ सर। तो इसी लैम्डा एम मेजर किया जा सकता है। लैम्डा नॉट एम क्या, बहुत आसान है ना, कंडक्टिविटी मीटर आता है, मतलब छोटा सा डिवाइस होता है। आप ये यस सर। बताइए ना, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो आपने मेजर किया होगा अभी तक तो 11 इक्वल्स में। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, तो उसी को आप उल्टा कंडक्टेंस आ जाएगा, यस है सर। ना, कंडक्टेंस आ जाए, कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ये सारे रिलेटेड टर्म्स है, वो कंडक्टेंस मेजर करके ही आ जाते हैं। ठीक है ना, वो मतलब इतना सस्ता सामान है जो आपके लैब में अवेलेबल है ना। यस सर। और उससे आप क्या पता लगा ले कि अगर हमने, इफ आई हैव एडेड 100 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, उसमें से 50% डिसोसिएट, 50% हमको मिलेगा या 30% मिलेगा या 20% मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाइज ये मतलब केमिस्ट्री में ओवरऑल बहुत यूज होता है रिपीटेटिवली। ठीक है, अब इससे मतलब यस इससे सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल नहीं आएंगे, बस फॉर एग्जाम्पल लुक एट अनदर क्वेश्चन। मतलब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि ये 2 ही मार्क्स में आएगा, वो 1 मार्क्स में भी आ सकता है। अभी जो हमने ये देखा ना, ये वाला सवाल मतलब 1 मार्क्स में भी आता है। आई हैव सीन, मतलब सेम सवाल 3 मार्क्स में और सेम सवाल 2 मार्क्स में भी। बात समझ में आ रही है? मतलब सीबीएसई के किसी साल में इट वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, और किसी साल सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। चलिए, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है क्या, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड is 7.8 into 10 power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its degree of dissociation for lambda naught m 390. वो लगेगा सवाल, लेकिन आराम से हम लोग करेंगे। I know the degree of dissociation alpha, it is equal to, बोलो, lambda m divided by, can you speak it please, याद हो जाएगा आपको यहीं पे, alpha is equal to lambda लैम्डा m, डिवाइड lambda बाय m, लैम्डा। lambda, हाँ lambda m divided by lambda naught, है ना, lambda naught याद रखना, lambda naught। I can determine lambda m by kappa into 1000 divided by the molarity, yes or no? यस सर। कापा कितना दिया हुआ बताओ? 7.8 इंटू 10⁻⁵ इनटू 1000 डिवाइड बाय बाय 10 टू द 390। पावर माइनस, ना मोलारिटी दिया ना रे भाई, मोलारिटी। यस हाँ सर, हाँ 10 टू द हाँ, पावर -3। 3, है ना, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7.8 इंटू 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, राइट, और +6 आ जाएगा, माय बैड, दिस विल बी 6 या। 78 आई गेस, राइट। यस सही है, सर। तो ये 78 आ गया, तो 78 डिवाइड बाई 390, क्या ख्याल है? यस सर। नाउ व्हाट विल बी 78 डिवाइड बाई 390? 1। 1 सेकेंड, क्यों 1 सेकेंड, 39 टेन जा और 39 टू जा, ओह ओके। यस सर। कितना आ गया, 0.2। आप क्या करते, 2 2 से करते क्या हर्षिता? नहीं सर, आई वाज अबाउट टू डू विद 3 आई थिंक। या 3, अरे 50। नहीं, थोड़ा सा हिम्मत करके बड़े नंबर से क्या करो, ठीक है, डबल डबल दिख जाएगा, ठीक है, यस हिम्मत सर। रखा कीजिए। चलिए, बस अल्फा आ गया। अब इसके बाद देखें, आज को के ऑल्सो, कंसंट्रेशन तो दे दिया ना उन्होंने, 10 टू द पावर -3, लेकिन आज द डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो, दैट विल बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कर देंगे, है ना। सर कैन यू शो द क्वेश्चन अगेन? आई डिडंट कॉपी द होल थिंग। हाँ हाँ, ठीक है, कॉपी कीजिए, कोई बात नहीं। दिस कैन बी फर्दर आस्क्ड आल्सो ना, इससे ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है, एक और सवाल इसके तरह भी कर लेंगे। So that's alpha squared by 1 minus alpha square? नहीं, 1 माइनस अल्फा होता है सर, Okay. ये अल्फा स्क्वायर इक्विलिब्रियम का है, ये तो मतलब 11th क्लास का, तो अभी तो आप याद ही कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, काफी थ्योरी है इसके पीछे। Done, sir.
See one more question. इसी में conductivity of methanoic acid is कितना centimeter Siemens centimeter. Calculate its molar conductivity and degree of dissociation if lambda m is given. ठीक है, तो दोनों निकालना, मोलर कंडक्टिविटी अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही निकालना। ठीक है, तो यू कैन से भाई सबसे पहले लैम्डा एम निकाल लेते हैं हम लोग। कापा into 1000 divided by molarity. Kappa is given as 2 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 3. नहीं, उल्टा कर दिया हमने। That is concentration, not kappa. Kappa is 8 into 10 to the power 5 into 10 to the power 3 divided by 2 into 10 to the power minus 3। अब देखिए कैलकुलेशन वगैरह भी बहुत ही ज्यादा आसान रखी गई है ना। फोर्जा एंड दिस विल गेट कैंसिलेशन हो, नहीं 10 बच जाएगा इससे, इट विल बी 40। मेक सेंस इसनो? Yes, sir. नाउ alpha is equal to lambda m upon lambda naught m, will be equal to lambda m कितना है 40, lambda naught m 404। अब इसको अप्रॉक्स करके मत कर दीजिएगा, मतलब कर सकते हैं वैसे तो, बट टाइम नहीं, अगर टाइम नहीं रहा तो अप्रॉक्स कर दीजिएगा, अदरवाइज डू कंप्लीट कैलकुलेशन। 4 से दोनों डिवाइड हो जाएगा ना, Yes, sir. है ना, तो कर लीजिएगा सर। अब देखिए एक टॉपिक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बचा हुआ है ना, उसमें इट इज यू हैव दिस टॉपिक। नीचे नीचे है ना, ठीक है। तो इसका हमने ना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, उसी में सारी डिटेल्स हैं, उसको दोहरा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बार बार उसको रिवाइज कर दीजिए, दैट्स इट ना, कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। क्या बैटरी, द टाइप्स ऑफ बैटरी दैट यू हैव, ठीक है, उसके बाद उसमें मतलब सम इंपॉर्टेंट बैटरीज यू हैव, देन यू हैव करोजन। करोजन वाला लॉजिकल है बट बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा उसमें ना। बैटरी एंड सेल्स एंड आपके पास करोजन, ये थोड़ा सा करोजन थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। वो लेक्चर आप हमसे बस एक बार मैसेज कर दीजिए हमको, आई विल बी रिमाइंडेड, फिर वो हम आपको लेक्चर भेज दें। ठीक है। So, so next class we'll be starting with another chapter. करेक्ट, केमिकल काइनेटिक्स ना, या कुछ और? Yes, sir. It's chemical kinetics is going on in my school, but for half yearly exams, I have D and F plug elements. तो डीएनए ब्लॉक आपने वो किया हुआ है, हाँ, लेक्चर 2 लेक्चर क्या है, नोट्स बने हुए हैं? yes, sir. फिर कल डीएनए ब्लॉक आपके खत्म कर देते हैं, Okay, sir. क्योंकि देखिए लॉजिकल पार्ट हो चुका है सारा, ठीक है। थोड़ा रिएक्शन वगैरह वाला पार्ट है लैंथेनाइड वगैरह का, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेंगे हम, लेकिन उसको खत्म कर देते हैं सर्कल, ठीक है।